Hello students, so welcome back to the third video on reproduction in flowering plants. In my last video, I taught you about the sexual reproduction, in which I covered the structure of the flower, in which I told you that stamen is the male reproductive organ of the plant and pistil is the female reproductive organ. So today I'm going to tell you the first topic is the unisexual and the bisexual flowers. अब ये स्टेमिन है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दोनों मेल पार्ट फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, दो पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, हेंस दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. टू बाई, ओके. एंड अगर ईदर ऑफ देम, ईदर the male reproductive organ called the stamen or the female reproductive organ called the pistil is present in a flower, one is present, so uni means one, so that flower is called as unisexual flowers. So I've written here also, if you want to write, that male reproductive organs and female reproductive organs can be present in the same flower or in the different flowers. And the definition of unisexual flowers is that which contains, or the flowers which contains only one reproductive organ, either male or female, they are called as unisexual flowers. Examples, very important: papaya, cucumber, corn, one another, that watermelon, they all are the examples of unisexual flowers. Now the bisexual flowers. The definition you can write: flowers which contains both, bi matlab two, both the reproductive organs, both the male reproductive organ, stamen, female part called pistil. दोनों जब एक ही फ्लावर में है, they are called as bisexual flowers. Examples: rose, hibiscus, you can write petunia, and there are so many. ठीक है? So these are bisexual flowers. Next topic is very important, is pollination. ठीक है? अभी pollination क्या होती है? See, final aim is seeds banna. So for that fertilization has to occur. For the fertilization to occur, the male gamete which is present in the pollen grain and the egg which is present inside the ovule, they have to meet. Now since the male nucleus and the female gamete or the female this nucleus or the egg, जो भी आप बोलो, they all are synonyms, इनको जब meet करना है, so अब pollen grain वहां से स्टिग्मा तक आएगा कैसे? So वो जो प्रोसेस है आने का, that is called as pollination. And the definition is transference of the pollen grains from the anther of the stamen, that is the male part, to the stigma of the pistil is called as pollination. ठीक है? Anther से pollen grain का निकलना और pollen grain से pollen grain का stigma पर जो pistil का एक part है, the topmost part, which I told you it is the stickiest part, वहां तक जाना, that is called as pollination. Now the pollination is of two types, the self pollination and cross pollination. Self, नाम ही बता रहा है, self and cross. Self मतलब अपने आप में, cross मतलब दो है, इधर का उधर जा रहा है. It will be more easy to understand if you look at this diagram. This is a diagram of a flower. ठीक है, एक फूल है, इसमें क्या है, this red part is anther and this black is called the stigma. ठीक है? अभी anther से आएंगे pollen grains and they are falling on the stigma of the same flower. ठीक है? So this is called self pollination. Definition is the transference of the pollen grains from the anthers. Transference of the pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the same flower. One very important thing, of the same flower or another flower on the same plant. See, this is a situation जब एक plant है, ठीक है, उसमें मेल फ्लावर इधर है और फीमेल फ्लावर उसी प्लांट में साइड में है, मतलब कहीं और होगा, बट एक ही प्लांट में है. So that type of pollination will be considered as self pollination. ठीक है, एक ही प्लांट में या एक ही फूल में. क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस, ये डायग्राम ऑफ फ्लावर, एंथर्स, दिस इज द स्टिग्मा. ठीक है, एंथर्स से क्या जाएगा, पोलन ग्रेन, यहां से जाएगा अलग फ्लावर में एंड इट विल लैंड ऑन द स्टिग्मा.
of another flower. Definition: when the pollen grains from the anther of the flower of one plant are transferred to the stigma on another similar plant is called as क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, इसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, पर वो प्लांट अगर अलग अलग है तब वो क्रॉस हो जाएगा, पर अगर सेम प्लांट है देन अगेन इट्स सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ द ट्रांसफरेंस ऑफ द pollen grains from the anthers to the stigma of the pistil is called pollination. ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया. पर अब वो जो ट्रांसफरेंस है ये होगी कैसे? सो दैट इज डन बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है, जो पॉलिनेशन करते हैं, और वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हैं? सो दैट पॉलिनेशन इज डन बाय insects, wind and water. First of all, we'll deal with insects. So most commonly, pollination by the insects is done by bees and butterflies. अभी bees and butterflies कैसे pollination करते हैं? होता क्या है, ये जो insects हैं, they want nectar. You all know nectar is what? It is a sugary liquid which is present in most of the flowers. अब ये जो insects हैं, they get attracted towards the flowers. पर अब इनको कैसे पता चलेगा कौन से में nectar है और कौन से में नहीं nectar है? So generally the flowers which have colored petals, like attractive petals, big and colored, जैसे आपका sunflower हो गया, marigold हो गया, because of their color, इनके बहुत सुंदर petals होते हैं, जिसको हम scientifically corolla भी कहते हैं. तो ये जो insects हैं, they get attracted towards these petals. So once they get attracted towards these petals because of their color, they come and sit on these flowers. Once they sit on the flowers to suck the nectar, the pollen grains of these flowers, they get stick to their bodies. ठीक है, वो जो pollen grains है वो इनकी bodies के साथ attach हो जाते, मतलब लग जाते हैं, stick हो जाते हैं. Once अब जो insects हैं, ये कभी एक flower पे, कभी दूसरे flower पे, so थोड़ा सा nectar इधर से लिया, तो जब जैसे ही ये दूसरे फ्लावर में जाएंगे, तो जो पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो गए थे, वो उधर जाके वो वहां पर जाके वो शेड हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, और इस तरीके से जो पॉलिनेशन है बाय द इंसेक्ट्स दैट हैपेंस. ठीक है, सो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं. टू मेन रिक्वायरमेंट्स. कौन कौन सी मेन रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट इज that the petals has to be bright, बहुत bright होते हैं and big. ठीक है, and second is जो इनके pollen grains होते हैं, they have to be little larger than the others, so that वो जो insects हैं उनकी body के साथ लग जाए. So the pollen grains has to be big. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे pollen grains. Got it? So in this way pollination is done by the insects. Second pollinating agent is wind. अभी जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, उनके पेटल्स जो है, उनका जो कोरोला है, दैट नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव, बिकॉज उनका मीडियम इज डिफरेंट पॉलिनेशन का. उनका पॉलिनेटिंग जो मीडियम है दैट इज विंड. अब विंड के साथ पॉलन ग्रेन्स को जाना है, सो दैट्स व्हाई द पॉलन ग्रेन्स हैज टू बी लिटिल स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेटेड. सो द पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल एंड लाइट, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दे हैंग outside the flowers so that the wind can catch it easily. ठीक है, वो बाहर थोड़े से होते हैं, नॉर्मल जो होता है वो ऐसे फ्लावर होता है उसके अंदर इनक्लोज होते हैं, बट जैसे ग्रास है, मेज है, राइस है, इन सब में क्या होता है, जो pollen grains है, दे आर हैंगिंग आउटसाइड, सो दैट जैसे ही हल्की सी भी विंड चले वो उनके साथ, उसके फ्लो के साथ वो भी चले जाए और दूसरे फ्लावर्स पे जाके लैंड करे, एंड इन दिस वे द पॉलिनेशन विल occur. Number third is water. The third pollinating agent. इसमें क्या होता है? Pollination in aquatic plants, especially the submerged ones. I hope you understand the meaning of submerged ones. Submerged मतलब होता है that the roots and the stem जो है वो पूरा पानी के अंदर है. जनरली तो बाकी प्लांट भी होता, बाकी पार्ट जो है प्लांट का वो भी जैसे लीव्स वगैरह वो भी अंदर होता है, बट कई केसेस में वो बाहर होता है. सो अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी दैट द पॉलिनेशन इन द एक्वेटिक प्लांट्स, स्पेशली द सबमर्ज्ड वन, दैट इज डन बाय द वाटर. इसमें भी क्योंकि पानी के जो करंट्स है, पानी के बहाव के साथ जो है
pollen grains को जाना है, then the pollen grains जो होते हैं that has to be light in weight. बहुत हल्के होते हैं, they are small in size, they are light in weight. और examples जैसे आ गया hydrilla हो गया, then another example is Wellisneria. इन सब में जो होता है pollination जो है that is done by the water. So there are three main agents by which the pollination is done. Main is insects, second is wind, third is water. So with these pollinating agents, I conclude my third video on chapter reproduction in the plants. And in this chapter, I guess the most important thing was the structure of the flower. Whole structure of the flower was very important, in which you have to mention the different parts like receptacle, calyx, stamen, pistil, corolla and everything. And even the pollination is very important. Please give emphasis on the diagram, especially the self-pollination and the cross-pollination diagram. That's very important. And in my next video, I'm going to cover the topics of fertilization and the growth of the new plant, how it occurs. So till then, bachas, study hard and good luck. Thank you.